नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं जीटीवी हिंदी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा आपके मामलतदार कार्यालय में आयोजित हुआ तालुका स्वागत कार्यक्रम। पीने के पानी, स्ट्रीट लाइट और नो हॉकर जोन में व्यापार करने वाले फेरीवालों के मुद्दों पर हुई गंभीर चर्चा। वापी के मामलतदार कार्यालय में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आज वलसाड जिले के कलेक्टर वैभव वर्मा की अध्यक्षता में तालुका स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 26 समस्याओं को प्रस्तुत किया गया, जिनमें से 16 ग्रामीण स्तर की और बाकी नगरपालिका क्षेत्र से संबंधित थीं। बैठक में सबसे अहम मुद्दों में पीने के पानी की समस्या, स्ट्रीट लाइट बंद होने की शिकायतें और नो हॉकर जोन में व्यापार कर रहे फेरीवालों की कठिनाइयां शामिल रहीं। नामधा क्षेत्र की फलियों में 2 महीनों से पीने के पानी की समस्या को लेकर लोगों ने चिंता व्यक्त की। वहीं वलसाड नगरपालिका क्षेत्र में मच्छी मार्केट से कच्चेगाम रोड तक सब्जी बेचने वाली महिलाओं और छोटे व्यापारियों को शाम 6 बजे के बाद हटाए जाने की समस्या भी सामने आई। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यह पूरा क्षेत्र नो हॉकर जोन घोषित किया गया है, इसलिए यहां किसी भी तरह का व्यापार पथराव करके नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद रोजगार छिन जाने की चिंता के साथ उपस्थित महिलाओं ने वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की। इस पर कलेक्टर ने सुझाव दिया कि यदि व्यापारी स्वयं कोई उपयुक्त स्थान सुझाते हैं तो वहां व्यवस्था की जा सकती है। सब्जी विक्रेता शर्मिलाबेन पटेल ने बताया कि महानगर पालिका बनने के बाद से कच्चीगाम रोड पर व्यापार कर रहे फेरीवालों पर नगरपालिका का रवैया सख्त हो गया है। लगभग 200 महिलाएं यहां सब्जी बेचकर जीवन यापन करती हैं, लेकिन उन्हें बार बार हटाया जा रहा है। इस विषय को लेकर 40 से अधिक व्यापारी महिलाएं कार्यक्रम में शामिल हुईं। साथ ही हनुमान मंदिर रोड से आगे स्ट्रीट लाइट बंद होने और 11 गांवों में पीने के पानी की आपूर्ति न होने की शिकायतें भी दर्ज की गईं। जमीन से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक में पुलिस अधिकारी, नगरपालिका अधिकारी और मामलतदार के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। प्रत्येक मुद्दे पर कलेक्टर वैभव वर्मा ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश और सुझाव दिए। आज माરું નામ રમેશભાઈ મગનભાઈ છે। આજે અમે આવ્યા હતા મામલતદાર ઓફિસમાં। આજે અહીંયા અમારે 1 મહિના પહેલાં અમે અરજી આપી હતી। એ અરજીના અનુસંધાનમાં આજે અમને બોલાવ્યા હતા નાયબ મામલતદાર સાહેબે। હવે આજે સાહેબે તો અમને ના પાડી દીધી મેઇન રોડ પર બેસવા માટે। અમને કીધું કે તમે કોઈ બીજો વૈકલ્પિક જગ્યા શોધો, અમે ત્યાં નગરપાલિકાને કહીને તમારી વ્યવસ્થા કરી આપીશું। કેટલા લોકો છે અને શું કામગીરી કરી રહ્યા છે? અમે પાથરણાવાળા લગભગ 200-250 માણસો છીએ। જો આ વ્યવસ્થા બંધ કરી દેવામાં આવે તો કેટલી મુશ્કેલી પડશે? આ જો વ્યવસ્થા બંધ કરી દેવામાં આવે તો અમારે ભૂખે મરવાનો વારો આવે। અમારા બાળકો જે ભણે છે સારી સ્કૂલોમાં, જે આપણા સરકારશ્રી કીધું કે એજ્યુકેશનને મહત્ત્વ આપ્યું છે, હવે એના બદલામાં અમે જો આ અમારી રોજીરોટી છીનવાઈ જશે તો અમારા છોકરા ફરી પાછા મ્યુનિસિપાલિટીમાં મૂકવાનો વારો આવશે અને એમનો ઘાટ એવો થશે કે નહીં ઘરના કે નહીં ઘાટના, કે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણાવીએ છીએ અને હવે ગુજરાતી મીડિયમમાં મૂકીએ એટલે એની હાલત શું થાય? અમારી માંગ એ જ છે કે અમને વાપી બજારમાં અમને પાથરણાવાળાને બેસવા દે, ભલે 2 થી 5 ફૂટ જેટલી જગ્યા આપે। અમે અંદરથી ફૂટપાથ પર બેસી અને અમે અમારો ધંધો કરીશું। અમે કોઈ ટ્રાફિકની અડચણ થાય, એવી કોઈ બી તકલીફ થાય નગરપાલિકાને કે પોલીસ પ્રશાસનને, એવું અમે કરશું નહીં। અમને પહેલાં તો કલેક્ટર સાહેબે ચોખ્ખી ના જ પાડી કે તમને અહીંયા બેસવા દેવામાં આવશે નહીં, પણ પછી અમે બહુ એમની આગળ આજીજી કરવા પર એમને નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકાને કીધું કે આમની યોગ્ય વૈકલ્પિક જગ્યા કોઈ શોધી અને એમને બેસવાનો કોઈ उपाय करो। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the video.